So, a very good afternoon to all of you. Welcome to Malhotra's IAS and welcome to the weekly current affairs class for polity and governance. I hope that your preparation is going well and you are thoroughly revising the current affairs through this initiative, which has entered the 8th week of continuous running, and the tremendous response which we have received for this initiative, that has been really commendable, right? Hanji, good afternoon Yaman, good afternoon Monica, good afternoon Rohit, Gajanan, good afternoon everybody. Chaliye, great. So let's begin with the topics. Hanji, good afternoon. Bapan Das has also joined. Chaliye, a very good afternoon to all of you and welcome once again to the weekly current affairs class for polity and governance. So आज जो topics हम discuss करेंगे, that is concerning the audit which was done by the CAG, the Comptroller and Auditor General of India for the UIDAI and Aadhaar, और उससे related जो भी findings आई हैं in that audit, that we are going to discuss. Then the next topic will be concerning the electoral bonds in the country and why the Supreme Court is, it has agreed to hear a petition concerning the electoral bonds, जो काफी टाइम से ड्यू थी, लेकिन अब CJI ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको they are going to hear it. Third topic that is going to be discussed today is concerning the role of the CGI's observations with respect to the Central Bureau of Investigation, the CBI. What are the issues that have been flagged, right? And what recommendations have been made. So all those topics are going to be covered. Make it sure that you are, joined with us till the very end. So the first thing, that is UIDAI, Aadhaar and the CAG audit. So as you all know, that is the apex audit institution in the country, the Comptroller and Auditor General of India. कई सारे newspapers में articles आए, even the explained section of Indian Express, the explained section of Hindu also, they also carried, and even we have had editorials concerning this particular news. So it becomes pertinent from the exam perspective, both the prelims and the mains, that we discuss what exactly is the issue. So there have been some observations which are a part of the audit done by the CAG for the UIDAI. क्या कहा है CAG ने जो है कि एक तरीके से कह लो खिंचाई की है. CAG has pulled up the Unique Identification Authority of India, जो एक statutory body है which is tasked with, या कह लो जिसकी responsibility है किस चीज की, आधार को manage करने की. Now why the UIDAI has been pulled by CAG is because that there has been deficient data management by the UIDAI as far as the Aadhaar data is concerned, as far as the complete set of citizens biometric data and their linkages are concerned, right? So this was the first performance review which was conducted by the CAG for the UIDAI, and ये 4 साल का total जो है CAG ने एक तरीके से कह लो over a span of 4 years, this first review has been conducted by the Comptroller and Auditor General, जिसकी हम findings के बारे में अब discuss करेंगे, right? So what exactly is the UIDAI? अगर हम बात करें, just before we get into the details of what are the CAG's observations, then you must know that UIDAI is, it is a statutory body. The Aadhaar Act established the body, जिसको हम कहते हैं Unique Identification Authority of India, right? And as of 2021, 31st of October, more than 131 crore Aadhaar numbers have been issued by this body. So that is a huge data which is at the disposal of UIDAI. ठीक है, अब इतना सारा डेटा जो है उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर है, then certainly there are going to be questions which are going to be asked, and that is what the CAG has done, right? So there are multiple issues which the CAG have, the CAG's report has highlighted. The first issue is authentication errors have been spotted. मतलब ये है कि whenever the people, they are punching their biometrics, right, the authentication does not happen or it is erroneous. उसमें errors आते हैं और वो authentication जो है process नहीं हो पाती. This is because there is an absence of a system to analyze the factors जिनकी वजह से ये authentication errors आ रहे हैं. So CAG said that what has stopped you from identifying such errors or identifying such issues which have led to such errors and rectify them. That is the first thing. Apart from that, the CAG said, or the CAG's report says, that the UIDAI is having so many people's data at its disposal, but there is no data archiving policy. Data archiving policy का मतलब ये है कि आप कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो टू स्टोर ऑल दैट डेटा, उस सारे डेटा को आर्काइव करने के लिए, ठीक है, बाद में जिसको आप एक्सेस कर सकते हो फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है. आई होप इतनी चीज समझ में आ रही है. हाँ जी, गुड आफ्टरनून गोपाल सिंह.
राइट. सो दैट इज द फर्स्ट इशू जो ऑथेंटिकेशन और एक आर्काइविंग पॉलिसी के रिलेटेड सीएजी की रिपोर्ट ने मेंशन किया है. द नेक्स्ट थिंग इज अपार्ट फ्रॉम दैट कि एक डेटा आर्काइव की जो पॉलिसी है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वाइटल स्टोरेज मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस. सो द पॉइंट इज कि अगर यूआईडीएआई के ऊपर इतनी it is having such a big responsibility, then how is it missing such a vital thing जिसको हम एक स्टोरेज मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं, राइट. सो दैट इज अ वेरी बिग इशू कि इतने साल हो गए यूआईडीए को एस्टैब्लिश हुए हुए. इट हैज बीन ईयर्स दैट द यूआईडीए हैज बीन मैनेजिंग आधार, राइट, एंड स्टिल इट हैज नॉट बीन एबल टू कम अप विद सच अ पॉलिसी. ठीक है, this is a very big concern which the CAG's report has highlighted, and we assume that the UIDAI will, in future very soon will come up with such a policy and will certainly satiate, or या कह लो, will certainly satisfy the CAG's report's findings, right. The next thing that is highlighted is data matching errors. Now, what exactly is data matching errors is that because there are no proper archives which have been done by the UIDAI. The CAG's report found when they analyzed the complete span of data over a set of 4 periods from financial year 2015 to financial year 2019, they have spotted that the Aadhaar card numbers or the Aadhaar holders, they have not been matched with their numbers even after 10 years in some of the cases. इससे होगा क्या, देखो इससे ये होगा कि कई केसेस में इवन हो सकता है कि the person has died, the person is no longer alive, but still somebody else might be using that Aadhaar in that person's name, or they still be using that as a proof to submit in the banks, maybe to do the KYC, or in n number of places where the Aadhaar is one of the accepted medium, right. So that is where such authentication and data matching errors can lead to some sort of troubles, right, and that is why this is such a big lacuna which the CAG's report has highlighted. The next thing leads to flaws and duplication. Now that is where the CAG has cited that there have been instances where the person is different and the biometrics are different. That is, it could be my fingers or my fingerprints, but the person who's using that biometric to generate the number for the Aadhaar is different. ठीक है, मतलब क्या है कि mismatch है between the biometric data and the individual who is possessing that Aadhaar, right. Good afternoon, Anuradha Shukla. Welcome to the session. अब इससे जो है, coming back to this particular point, इससे क्या highlight किया हुआ है that it shows that कि जो deduplication means that the individual whose biometrics have been taken and the number correspondingly that has been generated, they should be the same, they should be genuine. That is not the case, and that deduplication has not been done by the Aadhaar or by UIDAI also. तो इसका मतलब ये हुआ कि in the first place when we were we praised Aadhaar, we championed the case by the UIDAI that yes, such duplications or such duplicities, such flaws will be rectified, will be sorted by the Aadhaar. That has not actually been done in multiple cases. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, we have faulty biometrics and the documents correspondingly generated because of the authentication done by that faulty Aadhaar or biometric, right. So that is certainly another issue that the CAG's report has highlighted. So not last, moving to the next issue, that is privacy and safety concerns. Now certainly the point is, the CAG has raised here that UIDAI has not even ensured after so many years of Aadhaar being enrolled out that the devices which the agencies or companies which are using for authentication, they are not themselves storing that data. देखो यहाँ पे मतलब ये है, let me just move to the note itself. यहाँ पे इशू ये है कि जब आप लोग आधार जनरेट करने के लिए अपने बायोमेट्रिक्स दे रहे हो, राइट, दिस इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, this is a citizen, he is giving his biometric data, but that biometric data is being given to a third agency, or you can say the agency to which the work has been outsourced agency, and this will ultimately provide it to the UIDAI. ठीक है, it is not the UIDAI which is directly dealing with the citizen,
but the citizen is submitting that biometric data to an agency to which the UIDAI has outsourced that collection of biometric data. Now, what the point has been raised by the Comptroller and Auditor General is that whether the UIDAI has ensured कि क्या UIDAI ने ये ensure किया है that this particular agency जिसको ये outsource किया है अपने data collection की responsibility, whether this agency here is it itself storing that data or not. क्योंकि देखो under the Aadhaar this agency is not supposed to store that data by itself or for its own uses. It is supposed to pass it on to the UIDAI. ठीक है, लेकिन यहां पे CAG की जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में what has been highlighted that were the capabilities of personal or were the storing capabilities of personal information identified, they were looked into, they were verified. ठीक है, are you able to get this point? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी, मेहताब, अनुराधा, गोपाल, बपन, यमनदीप, मोनिका, रोहित, गजानन, एवरीबडी, ये वाली बात समझ में आ रही है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो बीच में इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रही है, दैट इज नॉट सपोज टू कीप दैट डेटा फॉर इट्स ओन यूज, right? But the UIDAI has not ensured that such applications and devices which were being used by the agencies or companies for authentication, were they themselves storing that data or not, right? चलिए, great, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो ये एजेंसी है, जो ये एप्लीकेशन है, जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जिस भी एप्स के थ्रू या कह लो जिस भी डिवाइस के थ्रू ये डेटा को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, अगर ये खुद भी स्टोर कर रहे हैं इस चीज को, दैट इज क्लियर वायलेशन ऑफ योर प्राइवेसी. That is not something which the law allows them to do, and that is where the CAG has said that this is putting the privacy of the residents at great risk. ठीक है, UIDAI has not ensured the security and safety of the data in Aadhaar vaults also, and they have not independently conducted any verification of the compliance process that is involved. So that is where it is the UIDAI that has been put in dock. ठीक है, जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे. ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? ग्रेट. हाँ जी, रोशनी सिंह, गुड आफ्टरनून. चलिए ठीक है, आई गॉट योर कॉन्फर्मेशन के सबको समझ में आ गया. सो दिस इज अनदर पर्टिनेंट इशू. Now moving to the next issue is concerning the process flaws. अब यहाँ पे UIDAI के रिगार्डिंग CAG की रिपोर्ट कह रही है कि कोई भी प्रिस्क्राइब्ड जो है ना, UIDAI has not prescribed any specific proof or document or process किस चीज के लिए, कंफर्म करने के लिए that whether a person who is applying for obtaining the Aadhaar number, whether that person is residing in India or not. क्योंकि आधार के जो रूल्स हैं अंडर द आधार एक्ट, there are certain number of years, there are certain number of days, 182 days to be specific, which are the limit or which is the prescribed limit for which one must reside in the country while or before applying for Aadhaar. UIDAI ने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं जो है वो बताया है अपने रूल्स में, रेगुलेशंस में, जिसके थ्रू दे आर इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग सच अ थिंग. And that is where the CAG says that there is no assurance that all the people in the country who possess this Aadhaar, जिनके पास आज की डेट में आधार कार्ड है, whether they are residents as per the definitions in the Aadhaar Act, कि आपका खुद का जो लॉ जिस तरीके से डिफाइन करता है रेजिडेंट्स को who are eligible to obtain an Aadhaar, whether they have obliged or whether they are actually residing in the country. अब इसमें प्रोसेस फ्लॉ एक और जो CAG की रिपोर्ट ने यहाँ कहा है that the UIDAI, what it does is that the Unique Identification Authority of India, it accepts from any person, जिस भी व्यक्ति को आधार बनवाना है, वो एक सेल्फ सिग्नेटरी या कह लो सेल्फ कन्फर्मेटरी खुद ही कंफर्म कर दे, and he provides a declaration that he or she has been staying in the country for these many days. Now CAG says कि what is the independent process through which you as an agency which is responsible for Aadhaar is identifying or is verifying that declaration, कि ये जो self declaration दे दी उस individual ने, what is the process through which UIDAI is confirming that yes, that self declaration is true, genuine or it is false. तो इसका मतलब ये हुआ कि anybody for that matter can flout the norms, flout the regulations and
apply for Aadhaar and obtain it. Right, so that will lead to what? That will lead to that even the foreign nationals, even the persons who could be anti-national elements, they also at the end of the day can end up obtaining that Aadhaar number because the UIDAI is having process flaws. Getting the point? ये चीज क्लियर हो रही है? देखो इसके ऊपर जो है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? प्लीज मेक इट वेरी श्योर that as far as GS paper 2 is concerned, ठीक है, there can be question in GS paper 2 as far as your governance is concerned or Indian polity and the different policy interventions by the government are concerned, and even in GS paper 3 where your internal security and cyber crimes, the cyber domain is concerned, यहां पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है. All right, so this is really important because otherwise also there is always this debate going around the privacy laws in the country, right, and the privacy concerns of the citizens. ठीक है, चलिए. So moving to the next issue, that is कि CAG ने की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है that UIDAI as an agency is not having sufficient linkages with the postal department in the country. ठीक है, और क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ दे आर नॉट हैविंग एडिक्वेट लिंकेज, व्हाट हैज लेड टू दैट वंस अ पर्सन अपडेट्स और जनरेट्स हिज आधार and the UIDAI, it dispatches that particular Aadhaar to the address, it is returned. More often than not, it is returned to the government after they could not be delivered to their intended recipients. अब यहाँ पे हो सकता है या तो the person is, he is fraud, maybe he is impersonating, किसी मिस्चीवियस पर्पस के लिए, किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए, किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए आधार जनरेट किया, एड्रेस गलत दिया गया जिसकी वजह से ये रिटर्न हुआ. दूसरा एक रीजन ये हो सकता है. दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दैट यस द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड द यूआईडीआई दे आर नॉट हैविंग सिनर्जीज बिटवीन देमसेल्व्स. ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से यूआईडीआई से कन्वे नहीं हो रहा है टू द पोस्टल डिपार्टमेंट और द पोस्ट ऑफिसेस, एंड दैट इज वेयर दे आर हैविंग इनएडिक्वेट अरेंजमेंट्स, या कह लो दे आर नॉट हैविंग एडिक्वेट अरेंजमेंट्स थ्रू विच the Aadhaar is delivered to the intended beneficiary or to the intended recipient here. ठीक है, so this is another big cross which the CAG's report has put on the UIDAI and its functioning, right? So that is another thing. Now the next thing that is related to revenue loss. अब इसमें देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है. क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज? That the UIDAI without the approval of the government or without asking any fees for n number of years till March 2019, it provided free of cost authentication services to different third parties, जैसे कि बैंक्स, जैसे कि मोबाइल ऑपरेटर्स. अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉ में ये प्रोविजन है दैट यू कैन प्रोवाइड फॉर फ्री ऑफ चार्ज ऑथेंटिकेशन सर्विसेज टू थर्ड पार्टी एजेंसीज लाइक द टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जैसे कि एयरटेल हो गया, जैसे कि वोडाफोन हो गया, जैसे कि जियो हो गया, राइट? जब आपको वो सिम कार्ड इशू कर रहे हैं तो आप यूजर का बायोमेट्रिक ले रहे हो, यू आर ऑथेंटिकेटिंग दैट यूजर अगेंस्ट द Aadhaar database, and the UIDAI at the back end is providing that authentication. So what is the fee that has been charged by these private players or maybe the banks also while you are providing those services? So that is what? That is basically contrary to their own provisions कि इनके जो खुद के regulations हैं, they do not provide for such actions to be committed by the UIDAI. राइट और इसका नुकसान क्या हुआ है कि सरकार जहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी, द गवर्नमेंट हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ दैट प्रेशियस रेवेन्यू बाय दिस एक्ट ऑफ द यूआईडीआई, राइट? सो द पॉइंट इज दैट नाउ इट इज दैट मनी हैज ऑलरेडी फॉरगॉन, राइट? ईदर यू प्रोसिक्यूट द यूआईडीआई इन द कोर्ट, यू ड्रैग द यूआईडीआई, दैट इज द गवर्नमेंट वर्सेस द गवर्नमेंट, है ना? बट उसमें लिटिगेशन में फिर यू नो दैट ऑल्सो रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी टू बी स्पेंट अपॉन. बट यस, that is certainly an area where the UIDAI should have acted more cautiously. चलिए, so the next issue is regarding too much dependence on outside contractors. अब यहाँ पे CAG कह रहे हैं कि UIDAI जो है उनको अपनी खुद की responsibilities जो हैं, जो भी whatever the roles and responsibilities were envisaged for the UIDAI, those roles and responsibilities the UIDAI is outsourcing, कि बाहर के आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा है यूआईडीआई
it is not fulfilling those responsibilities by themselves, right? It is too much reliant on these contractors. और अभी हमने जस्ट इससे पिछले इशू में देखा कि ये जो आउटसाइड एजेंसीज हैं जो ऑथेंटिकेट कर रही हैं या जो डेटा कलेक्शन कर रही हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूआईडीआई, इनके ऊपर भी यूआईडीआई जो है सही तरीके से इट इज नॉट टेकिंग कंट्रोल और टेकिंग अ लुक एट वेदर दोज एजेंसीज आर स्टोरिंग दैट डेटा बाय देमसेल्व्स और नॉट। तो यहां पे देखो ये जो बहुत ज्यादा रिलायंस है ना ऑन दीज कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर हम कह सकते हैं ऑन दीज आउटसाइड एजेंसीज, दैट इज हैविंग issues with right to privacy, that is having issues with the statutory obligations which the UIDAI is having on itself as a body, right? And this is, you can use this quote in your mains answers also कि ये जो है CAG की रिपोर्ट में as it is वहां से उठाया मैंने, this is what exactly the CAG has said. CAG ने एडवाइस किया UID को that it will be better that if it proactively accepts its role and responsibility, right, and reduce its continued dependence on outsourced agencies and instead partner with the state governments for enrollment process. ठीक है, तो अच्छी खासी खिंचाई CAG ने की है यहाँ पे UIDAI की। ठीक है, हाँ जी, सभी लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? फटाफट थम्स अप बना दो एक कमेंट सेक्शन में, आई विल बी एबल टू गेट दैट। आप लोगों को सारे इशू जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो सारे समझ में आ गए। All right, so the next thing is इसका solution क्या है? What next, or how the UIDAI, after all the issues that we have discussed by the CAG's report or the CAG's audit, what can be the next thing? So now first things first, कि जो self declaration वाली बात है जहां पे deduplication वाला process compromise हो रहा है, the UIDAI is suggested that it should go beyond that process of self declaration, ठीक है, and prescribe a procedure and the required documentation कि आप सिर्फ face value पे prima facie you cannot rely upon this self declaration and you must declare a proper process, a procedure and the required necessary documentation other than obviously the self declaration। ठीक है, कि क्या वो self declaration सही है, genuine है, fake है, नहीं है ना, and on that it should confirm and authenticate the residence status of the applicant। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि बोगस जो है आधार वो जनरेट नहीं होंगे, जेन्युइन आधार जेन्युइन लोगों के ही जनरेट होंगे। देन इट शुड ऑल्सो फ्रेम अ सूटेबल डेटा आर्काइवल पॉलिसी। देखो ये एक अच्छा खासा जो है ना CAG ने पॉइंट रेज किया है जो अभी तक पब्लिक आई से दूर था, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो कोट इट इन योर आंसर्स दैट सर्टनली टू मिटिगेट द रिस्क्स ऑफ वल्नरेबिलिटी टू डेटा प्रोटेक्शन, because data protection in this country is really not taken seriously by the agencies and even by some of the state actors, तो इसलिए इस चीज की भी जरूरत है। that can be the second next thing. Apart from that we can also talk about, right, that alternative ways must be determined to establish the unique identity of children below 5 years, कि बच्चों को भी आधार जो है नंबर्स इशू करना शुरू कर दिया UIDAI ने, बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी बिलो 5 years एंड आफ्टर 5 years, क्योंकि देखो उस वक्त क्या है, द बॉडी ऑफ द पर्सन ऑफ द चाइल्ड इट इज ग्रोइंग and on behalf of the child it is the guardian or the parent who are handling their Aadhars, right? So that has to be ensured that they are also not misused and their identities are absolutely genuinely foolproof identified, right, identified in a foolproof manner. And apart from that it certainly needs to strengthen the automated biometric identification system, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑथेंटिकेशन एरर्स वाला जो पॉइंट था जो CAG ने रेस किया है उसको प्लग करने के लिए यू नीड टू स्ट्रेंथन योर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम विच इज ऑटोमेटेड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि डुप्लीकेट जनरेशन जो हो रहा है आधार का दैट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, राइट, ठीक है जी, ग्रेट। चलिए, सो दैट आर सम पॉइंट्स विच कैन बी कोटेड इन द वे फॉरवर्ड और व्हाट कैन बी नेक्स्ट डन बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो अगला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं आज दैट इज कंसर्निंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हुआ क्या है कि काफी महीने हो गए अब तो, या कह लो साल से ऊपर हो गया, 2 साल से ऊपर हो गए, दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज अ नंबर ऑफ पिटिशंस बीइंग फाइल्ड चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ और चैलेंजिंग द प्रोविजंस इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, व्हाट इज द स्कीम, व्हाट आर द इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड। तो अगर 2 मैं
एनजीओस की बात करूं, यहां पे एनजीओस का भी रोल साथ में ही है कि दो एनजीओस हैं, दैट इज बाय कॉमन कॉज, बाय द नेम कॉमन कॉज, एंड एडीआर, दैट इज द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अ वेरी प्रोमिनेंट एनजीओ which you can also follow to update your notes regarding NGOs. इन दोनों ने पिटिशन फाइल की है इन द सुप्रीम कोर्ट. earlier only it was filed, now it is the observation that the CJI has assured कि चीफ जस्टिस ने अब अश्योर किया है कि इन पिटिशंस को हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, वी विल स्टार्ट कंडक्टिंग हियरिंग्स ऑन इट, राइट. But the point is that the petition was filed in 2018 itself, and it alleged that the electoral bond scheme is distorting democracy. तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन है या एक्यूजेशन है which the NGOs have raised regarding the electoral bond scheme. The point is कि इतनी ऐसी क्या issues हैं या क्या criticisms हैं in the electoral bonds that such allegations have been made, and the petition is being entertained by the Supreme Court. Remember, the Supreme Court has not refused, neither it has rejected. It has said that yes, we will take up these petitions and we are going to start hearings very soon on the electoral bond scheme. So कई सारे articles थे, even आज भी एक editorial आया हुआ है, ठीक है, regarding electoral bond scheme. एक ये आर्टिकल था, एक और ये वाला आर्टिकल था. दिस इज फ्रॉम इट्स टुडेज डेट इटसेल्फ, 11th April. आप डेट देख सकते हो यहाँ पे, राइट. दैट इज द कोर्ट मस्ट सेटल चैलेंज टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्विकली, द सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शंस इज एट स्टेक. सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्शंस की सैंक्टिटी इज एट स्टेक, दैट सिंपली मीन्स दैट the existence of a free and fair, a vibrant democracy in India, that is also being put to a question mark, right? And that is why it is important that we certainly go for conducting this hearing and coming out clean as far as whatever the stand Supreme Court wants to take regarding the electoral bond scheme. ठीक है जी. तो ये कई सारे आर्टिकल्स हैं, मैंने आपको दिखा दी लिस्ट, और इस वजह से ये बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम. So first things first, the late finance minister Arun Jaitley introduced that we today know as electoral bonds in his budget speech in 2017 along with the finance bill, and it was notified in January 2018, right? My pardon, it was introduced in 2018 and it was notified in 2018 and it was introduced in 2017, right? अब ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक कह लो इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसके ऊपर जो है आप एक अमाउंट जो है दैट यू कैन परचेज, और वो अमाउंट आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो, ठीक है. यू कैन परचेज एनी इंडिविजुअल और एनी फर्म फॉर दैट मैटर हु इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, any individual or for that matter any company or corporate or firm incorporated in India can purchase this bond from a bank that is a designated branch of the State Bank of India. They can purchase it. It will not have their name, and then they can give it to the political party, and that will be credited to the account of this political party. ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, right? So it is like a promissory note which can be purchased by a person who is a citizen of India or incorporated or established in India. ठीक है, so that is the very basic of it. But nonetheless, coming to the polity and governance part of it, right, कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ये दिया गया है, they can encash it, right? Those are some of the names, some of the details, and like the bank notes, they are payable to the bearer. कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर मान लो मैंने 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसी भी पार्टी को दे दिया, so then they can just go and deposit it in the bank, and the bank will credit rupees 1 crore to their account. लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. They are going to be free of interest, without interest. All right, कोई भी इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है. So these are some of the basic things how an electoral bonds look. ठीक है, ये एक सैंपल है, ऐसे एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दिखता है. ऊपर नाम लिख रखा है बैंक का, दैट इज स्टेट बैंक, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑथराइज्ड बैंक व्हिच इज अलाउड टू सेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है. फिर उसके बाद नीचे अमाउंट ऑफ रुपीज लिखा होगा, लेकिन कहीं पे भी डोनर का नाम नहीं होगा. दैट इज योर आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी अनोनिमस, राइट? सो प्लीज बी वेरी श्योर, ठीक है. और एक ये बड़ा अच्छा एक इंफोग्राफिक भी आया था विच सेज दैट व्हाट आर द इश्यूज एंड द criticisms or charges that have been raised, जिसको सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्स करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ रिस्पॉन्सेज भी दिए हैं, राइट? सो लेट्स वन बाय वन गेट इनटू दीज इश्यूज, दैट what exactly is the case here that we are going to discuss.
So the State Bank of India is the authorized bank. That is the first point जो आपके लिए prelims based एक question हो सकता है जो ध्यान में रखना है. उसके साथ साथ they are sold in some denominations of rupees 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and rupees 1 crore. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जितने मर्जी रुपए का बॉन्ड ले सकते हो. इन्हीं डिनोमिनेशंस के मल्टीपल्स में यू कैन टेक द बॉन्ड्स, राइट. The good thing about them is that they can be purchased only digitally or via checks. मतलब कि an individual cannot go and offer the bank cash to purchase an electoral bond. It has to be a transaction which has to be made either through check or through online or digital mode. ठीक है, तो इसमें chances are less that you know you can convert your black money directly into an electoral bond, right. Then अपार्ट फ्रॉम दैट जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करके दोगे, राइट, दैट कैन ऑल्सो एनकैश दैट मनी इन द बैंक दैट इज एन ऑथराइज्ड बैंक, दैट इज अगेन स्टेट बैंक. ठीक है, एंड द वैलिडिटी इज फॉर 15 कैलेंडर डेज. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. एंड इसके बाद जो है इफ द यू नो इफ द नो पेमेंट इज मेड टू द पेई पॉलिटिकल पार्टी इफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर दिस period of 15 days. तो ये पूरा इन अ नटशेल है हाउ द इलेक्टोरल बॉन्ड फंक्शंस, राइट. कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दे कैन परचेज इट, बट पेमेंट हैज टू बी मेड ईदर थ्रू चेक और थ्रू डिजिटल मोड, दैट टू इन एन ऑथराइज्ड ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, और किन डिनोमिनेशंस में, इन डिनोमिनेशंस में. इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है प्रीलिम्स में. ठीक है, सो प्लीज बी अवेयर. Please please be aware of all these things. Already the question has been asked once in the UPSC, right. Next is what are the conditions for the party to obtain it. कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग दी जा सकती है, right. So under the Representation of People's Act, if you are if you're a registered party, along with that you have secured at least 1% of the valid votes polled in the latest general elections, मतलब कि लोकसभा के elections, right, that is the लोकसभा, और the assembly elections, मतलब कि किसी भी state legislature के elections में, then you are eligible to receive the funding through electoral bonds, right. And such a party is going to be allotted a verified account by the election commission. देखो सिंपल सी बात है, हम अभी तक बात कर रहे हैं कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेजिग्नेटेड या ऑथराइज्ड ब्रांच में अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में मनी कैन बी डिपॉजिटेड. ठीक है, एंड दिस इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड ओनली थ्रू दिस अकाउंट, अदरवाइज दे कैन नॉट बी मेड. सो द ईसीआई विल बी ऑथराइजिंग या कह लो वेरीफाइंग दैट अकाउंट, राइट. एंड द इलेक्टोरल बॉन्ड विल नॉट बियर द नेम ऑफ द डोनर एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, एंड दीज आर द कंडीशंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी आल्सो टू ऑब्टेन फंडिंग थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. नाउ कमिंग टू व्हाट आर द एडवांटेजेस. देखो ऐसा ही नहीं है कि सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं, क्योंकि अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिटिकली एनालाइज और इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द मैटर बीइंग सब जुडिस, अब इसके ऊपर रूलिंग कैसे आती है वो तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू, राइट, even in the state examinations also, that critically analyze the pros and cons of the electoral bond scheme. Then also you should be having some advantages at your hand to better deal with that question, right. So what are some of the advantages that we can draw here? The first thing is that the government itself has been saying that the common man, the common citizen, they can easily fund their the political party of their choice by purchasing electoral bonds, and that too not through the black money. क्यों? क्योंकि transactions कैसे हो रही हैं, either check के through या फिर digital mode में. फिर as per the government it enhances the accountability, although this is being debated. ठीक है, this is being debated, but still just to put forth the argument which the government said, or even while the government was introducing it in 2017-18, the finance minister had himself said that it is going to increase accountability. क्यों? क्योंकि political party के designated bank account में ही जो है ये money credit होगी, and the election commission also will be having complete knowledge about it, right. So that is what the entire sum of money which has been received by the political party, it will provide all the details, it will expend all the details of that money, right. That is where, as per the government, the accountability issue or the accountability stands to be
increased, right? इसके ऊपर डिबेट करेंगे हम अभी जब हम इसको डीमेरिट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इट रिमेन्स और इट प्रिजर्व्स द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर, मतलब कि कहीं पे भी जो भी डोनेट कर रहा है व्यक्ति, दैट मनी that is kept anonymous, that person's identity is not revealed. So how is that good, or why it is an advantage? Because the government cannot target you, or even the opposition cannot cry foul that such and such individuals who are friends of the ruling party, they are funding the government. So they can said to be another advantage. But more than the advantages, as we all know, there are the disadvantages which are there, and that is why it is making news. तो इश्यूज एंड क्रिटिसिज्म या डीमेरिट्स या कह लो कॉन्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला इशू जो जिसके ऊपर क्रिटिक्स ने, एकेडमिक्स ने एंड इवन द इलेक्शन कमीशन हैज रेज्ड क्वेश्चंस इज दैट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स tilts the entire electoral funding procedure in the favor of the ruling party. Because look, the donor's identity is hidden from the public view. It does not mean that the government also cannot look into who is funding opposition parties and who is funding the ruling party. Why? Because all the funding through the electoral bonds is happening through the State Bank of India. अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू सारी फंडिंग हो रही है, पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है इट इज वर्किंग थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, and the ruling party which is having the government at the center, that can certainly take out the identity of the persons who are, or the corporates for that matter, who are funding the opposition parties, and they can use that information to specifically and selectively target those individuals and those companies which are funding the opposition parties, right? Yes, Roshni, these topics are very much relevant for both prelims and mains, right? Yaman, banks must be having the identity of buyer. Certainly the bank is having the identity of the buyer, but not the general public. ठीक है? यमन, बैंक्स के पास आइडेंटिटी है, सरकार के पास आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आइडेंटिटी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के पास आइडेंटिटी नहीं है। तभी हम कह रहे हैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म में कि जो रूलिंग पार्टी है दैट इज गोइंग टू हैव एन अपर हैंड, उसके पास एक एडवांटेज हो सकती है, दैट सिंस द रूलिंग पार्टी इज हैविंग द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई इट इज द रूलिंग पार्टी, दैट कैन हैव access to that information, that which person or which company is funding the ruling party and which are funding the opposition, and then they can selectively target those individuals or those companies which are funding the opposition parties. ठीक है? So इसकी वजह से ये criticism यहाँ पे बनता है that this allows the ruling party the possibility to victimize those individuals who are funding the opposition, right? I believe this point is clear to you. ठीक है जी? चलिए, great. So now moving to the next point, the next criticism that is there, that concerns something, that is the government, it removed the upper limit. पहले क्या था, that there was an upper limit, there was an upper ceiling, और उससे नीचे ही जो है कंपनीज फंड कर सकती थी किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन वो जो पहले लिमिट थी ऑफ 7.5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स, पिछले 3 साल का जो भी उस कंपनी का या कॉर्पोरेट का एवरेज नेट प्रॉफिट था, दैट वाज द अपर लिमिट, 7.5% ऑफ दैट नेट एवरेज नेट प्रॉफिट। कि अगर मान लो 100 रुपए पिछले 3 साल में किसी कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट था, तो आउट ऑफ दैट 100 रुपीज, 7.5 रुपीज द कॉर्पोरेट कैन गिव एज इलेक्टोरल फंडिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, एक अपर कैप थी। नाउ दिस अपर कैप हैज बीन रिमूव्ड. The government amended the Companies Act and it removed this ceiling. तो इससे है क्या, इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि देखो जो कॉर्पोरेट है, this corporate can go on for unlimited amount of funding to the government, unlimited funding to the government, or you can say the political party which is already in government, and this will lead to that we call as crony capitalism. क्रोनी कैपिटलिज्म मीन्स दैट कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करके जो कॉर्पोरेट है दैट हेल्प्स देम टू गेट टू पावर, एंड देन द गवर्नमेंट विच हैज रिलाइड अपॉन द मनी विच वाज फंडेड बाय द कॉर्पोरेट टू गेट इलेक्टेड टू द पावर, दैट
government now will bring in policies which favor the corporate houses or which favor such industries or such firms. So that will what? That will lead to crony capitalism. ठीक है? Yes, exactly. Can the ruling party also manipulate funds if there is anonymity of the donor? No, Vikramaditya, the ruling government, it cannot manipulate the funds, but yes, they can. वो ये चीज जान सकते हैं कि कौन सी फर्म्स हैं या कौन से इंडिविजुअल्स हैं विच आर फंडिंग द ऑपोजिशन पार्टीज, विच आर नॉट फंडिंग द रूलिंग पार्टी. ठीक है? एंड उसके बाद दे कैन टारगेट सच इंडिविजुअल्स और सच companies which are not giving funds to the ruling party but which are giving funds to the opposition parties, right? And that will lead to the misuse and abuse of power by the government or the ruling party, right Vikram? I believe that is clear. ठीक है, चलिए. So that is another issue जो यहाँ पे हमने ये crony capitalism वाला angle discuss किया है. Now the point is, what is the election commission's stand and what can be the way forward? So first things first, जो इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ पे क्या कहा है कि in an affidavit which the election commission had filed before the Supreme Court, it had said that the electoral bond scheme is a retrograde step, and as far as transparency is concerned, this is certainly not good for transparency and it should be withdrawn. That is what the election commission has said. ठीक है? इसके साथ साथ it has also said, we can also quote former chief election commissioner OP Rawat in an interview to one of the media houses, right? Mr. Rawat said that the whole system of electoral bond scheme is absolutely opaque and vulnerable to manipulation. So he confirmed that the election commission was not consulted by the government. कि भाई इलेक्शन कमीशन या कह लो निर्वाचन आयोग से कोई भी सलाह नहीं ली केंद्र सरकार ने. The election commission was not consulted even before bringing in such a scheme. So the point is that it is the responsibility of the election commission to conduct free and fair elections in the country. But while you are talking about the electoral bonds, you have not taken the viewpoint of the election commission, right? So that means the election commission's confidence was not generated. It was not taken on board before bringing in such a scheme. So the best thing is that the government must proactively address all these concerns in the Supreme Court. Now, since the matter is already sub judice, right, and try to address these concerns and plug in those deficiencies in the electoral bond scheme. ठीक है? I believe this is clear to all of you. बाकी जब भी कोर्ट की रूलिंग आएगी, then again we are going to take up this topic. हाँ जी, प्लीज कंफर्म इट टू मी, फटाफट बता दो. ये क्लियर हो गया ना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाला पूरा इशू? इज इट क्लियर टू एवरीबडी जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हाँ जी, विवेक, विक्रम, यमन, रोशनी. चलिए ठीक है. मीनवाइल यू रिस्पॉन्ड. लेट मी जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीबीआई एंड इट्स क्रेडिबिलिटी. Now, why this topic is in news? Because the Chief Justice of India, while delivering a lecture on democracy and the role of investigative agencies in it, has touched upon the credibility of the CBI, right? So let's look into what exactly is, the observations that the CJI has made. But before that, let's quickly just revise quickly what exactly is the CBI. It is a premier investigating police agency, right? How was it formed? Is it a statutory or a constitutional body? No, it is neither a statutory body nor it is a constitutional body. It is just a body which was set up by a resolution of the Ministry of Home Affairs. ठीक है? और संथनम कमेटी जो है for prevention of corruption, that was formed and that recommended the government to create a body like the CBI to investigate such cases, right? So it functions under the Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pensions and Public Grievances. एक prelims based question यहाँ पे बन सकता है आपका UPSC एग्जाम में, right? And even in the state civil services. So it is functioning under this ministry, set up by a resolution of the Ministry of Home Affairs. कौन सी कमेटी के recommendations पे? संथनम कमेटी के recommendations पे. And one another interesting fact, जो हम इंटरपोल की बात करते हैं या कह लो इंटरनेशनल पुलिस की बात करते हैं, इंटरपोल मेंबर कमिटीज की कंट्रीज की बात करते हैं. सो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, सीबीआई इज द नोडल पुलिस एजेंसी which represents our country in the international investigations concerning Interpol member countries, right? That is the international police member countries. So that is the brief regarding CBI.
Now apart from that, please bear in mind it is not a statutory, neither a statutory nor a constitutional body, right? But it derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act, द DSPE एक्ट। ठीक है, कहां से ड्राइव करता है सीबीआई अपनी पावर? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू, बट अपनी एग्जिस्टेंस एक रेजोल्यूशन से ड्राइव करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ऑब्जर्वेशंस व्हिच द सीजीआई हैज मेड। सो द सीजीआई हैज सेड कि जिस तरीके से सीबीआई ऑपरेट करती है, इट्स क्रेडिबिलिटी हैज कम अंडर डीप पब्लिक सस्पिशन एंड स्क्रूटनी, राइट, बिकॉज ऑफ द वे इट हैज बीन कंडक्टिंग इटसेल्फ, द वे इट हैज बीन कंडक्टिंग investigations and raids and actions and inactions both. So the CJI has listed diverse issues which are affecting the complete system because of such way of functioning of the Central Bureau of Investigation. So let's look into one by one what exactly has the CJI observed. So these are some of the points that have been raised, and the CJI was particularly talking about democracy and the roles and responsibilities of investigative agencies, जिसमें कि आपका बहुत एक major role कौन play करता है? CBI, राइट। स्पेशल 26 देखी है ना सब लोगों ने ठीक है, स्पेशल 26 देखी है ना, तो कुछ वैसी ही बात कह लो कि सीजीआई यहां पे कर रहे हैं रिगार्डिंग द सीबीआई। अखिल सक्सेना जी, डीएसपी एक्ट से नहीं बना है सीबीआई, डीएसपीई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से ये अपनी पावर्स डिराइव करता है। ठीक है, जो पावर्स यूज करती है सीबीआई, वो पावर्स जो हैं डीएसपी एक्ट से यूज कर रहे हैं, लेकिन जो सीबीआई एज अ बॉडी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है अखिल, आई बिलीव आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको मिल गया। आई बिलीव योर क्वेरी हैज बीन एड्रेस्ड, राइट अखिल सक्सेना। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अहेड, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, दैट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, sufficient manpower and modern equipment, inhuman conditions at the lowest rung of the police, questionable methods of procuring evidence, officers failing to abide by the rule book, मतलब कि rules and regulations को follow नहीं कर रहे, rather flout कर रहे हैं, and lack of accountability for erring officers या फिर जो officers who are on the wrong front. So let's discuss all of these one by one. So the first thing which was highlighted by the Chief Justice was that, you know, the CBI, it seeks frequent adjournments to the cases in the court. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है that there are going to be delays in dispensing justice. So hundreds of witnesses and filing voluminous documents in pending trials. जानबूझ के सीबीआई की तरफ से, what the CJI, as per the CJI, that the CBI files big documents, voluminous documents which runs into thousands of pages. किस लिए? So that to delay the case or at best, you know, cause inconvenience. That is what the CJI has said. Apart from that, he said that with the change in the political executive, या फिर कह लो with the change in the government of the day, there is change in priorities with the CBI also. मतलब क्या हुआ कि जो पहले 2013-14 में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, that the CBI is a caged parrot, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सीबीआई उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती है. इट डज नॉट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी, रादर इट एक्ट्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द government in the center. That is not what it is supposed to do. That is not what its roles and responsibilities are in the first place, right? And apart from that, repeated transfers of officers, they lead to a change in direction of the probe. इसका मतलब ये हुआ कि what the government does is that it tries to bring in convenient officers. What is meant by convenient officers? कि जो इन्वेस्टिगेशन को या तो कह लो डाइल्यूट करेंगे या फिर डिले करेंगे in accordance with the interests of the central government. ठीक है, so that is another thing that has been flagged by the Chief Justice. Apart from that, another issue that has been highlighted is that this often leads to acquittal of the guilty and incarceration of the innocent. मतलब कि जो व्यक्ति innocent होता है, he goes to the jail and the ones who are actually guilty, they are freed. They are freed, right? And this certainly affects the public trust in the system. Obviously, अगर जो है guilty लोग हैं वो they are walking free और जो innocent है उसको सजा हो रही है, तो पूरा public का जो trust होता है in the system, that certainly is eroded.
राइट, एंड द कोर्ट्स कैन नॉट सिंपली मॉनिटर एवरी स्टेप। देखो जुडिशरी की अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। व्हाट द सीजे सेड इज कि जुडिशरी हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, द कोर्ट जस्ट कैन नॉट मॉनिटर एवरी स्टेप, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज टू act, has to assist the court, and if the investigative agency is not fulfilling its role, then certainly this is going to happen। ठीक है, कि आप इस तरीके से एविडेंसेस पेश करोगे कि जो इनोसेंट है दे आर गोइंग टू गो टू द बार्स एंड द गिल्टी आर वॉकिंग फ्री, ठीक है। बट दिस इज नॉट वेयर द सीजीआई स्टॉप्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे अब आ रही है कि रिकमेंडेशंस क्या हैं या किस तरीके से चीजों को सुधारा जा सकता है। So on that count, what the CJI suggested that we can maybe create an independent umbrella institution। umbrella institution मतलब ये हो गया कि इसी एक broader institution के नीचे आपका CBI भी काम करे, enforcement directorate भी काम करे, serious fraud investigation office that is SFIO ये भी काम कर सकता है इसके नीचे, ठीक है। जितनी भी ऐसी investigative agencies हैं they can function under one common body। That is what the CJI has suggested। Obviously ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर किस तरीके से वो एक्ट करेंगे, बट what the CJI says that एक immediate need है, we need to immediately create such an umbrella institution, right, जिसके नीचे ये सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कैन फंक्शन। क्योंकि इससे देखो मल्टीप्लिसिटी या कह लो डुप्लिसिटी भी कम होगी। डुप्लिसिटी कैसे कि एक ही केस को मान लो सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर एसएफआईओ भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उससे हो क्या रहा है कि मैटर तो एक ही है लेकिन मल्टीपल एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन दैट इन्वेस्टिगेशन एट द सेम टाइम और मे बी एट डिफरेंट टाइम्स। सो एक कॉमन अम्ब्रेला के अगर अंडर हम फंक्शन करवाएं इन सभी एजेंसीज को, देन दैट कैन प्रिवेंट सच लॉस ऑफ प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स कि उन सबका टाइम खराब नहीं होगा एंड दे कैन बेटर कोऑर्डिनेट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। This body is, as the CJI suggested, it can be created by a law which clearly will define its powers, functions and the jurisdiction, ठीक है। And repeated transfers ना हो यहाँ पे, which certainly change the probe of the direction, right। Apart from that, this is the first recommendation। The next recommendation is that कि जो भी ऐसी आप independent एक umbrella body बनाओ या कह लो जो umbrella body बनाओगे उसकी independence ensure करना is going to be paramount, that it does not functions or it does not gets influenced by the government, जो कि हम देखते हैं किसके साथ केस है, it is the case with the CBI here, right। So it must be headed by an independent and impartial authority। Its personnel should be appointed by a committee similar to which the appointments are made for the CBI director, and its head could be assisted by the deputies having specialization in different domains। देखो इससे क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है दैट इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन टाइमली एंड कैन बी डन इन अ मोर प्रोफेशनल मैनर। दैट इज व्हाई वी नीड सर्टेन डोमेन स्पेशलिस्ट्स हियर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है? आई बिलीव दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन द नेक्स्ट रिकमेंडेशन, जो अगली रिकमेंडेशन दी है सीजीआई ने, दैट इज कंसर्निंग ड्यूप्लिसिटी ऑफ एफर्ट। जो हमने अभी बात करी कि अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है हम सेटअप करते हैं जो कि एक ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके बीनीथ सारी ऐसी एजेंसीज को हम फंक्शन करवा सकते हैं, देन इट विल सर्टनली एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, राइट। इट विल सेव योर टाइम, it will save your money। Apart from that, it will save the precious human resource of the government, of these agencies। कि जो देखो सिंपल सी बात है, there are also the people in these agencies, the IPS officers, the officers who are on deputation in these agencies, their time and their energy is also going to be saved, right, and they can be utilized for some other cases or they can be utilized elsewhere, right। That is also an important part, ठीक है। और ये जो ड्यूप्लिसिटी है इसका असर एक क्या होता है कि इट लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ एविडेंस, कॉन्ट्रडिक्शन इन डेपोजिशंस, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन ऑफ इनोसेंट्स। इसके ऊपर अभी पीछे एक स्टैटिस्टिकल डेटा आया था दैट आउट ऑफ एवरी हर 4 में से जो 3 प्रिजनर्स हैं, मतलब कि अगर हर इफ वी टॉक अबाउट 4 पीपल हु आर लाइंग इन द जेल, आउट ऑफ दोज 4 every 3 are under trials कि ये अभी तक जो हैं their guilt has not been established, इनको इनकी conviction नहीं हुई है, इनका the court has not held them guilty but their trial is going on and they are languishing in jails for number of years,
ठीक है, तो वो भी हम यहां से इस चीज को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. देन it will end in the multiplicity of the proceedings and will prevent the institution from being blamed as a tool of harassment. Obviously, certainly, है ना. फिर इसके साथ साथ once an incident is reported, the organization should decide as to which specialized wing should take up the investigation. देखो सिंपल सी बात है, इस अगर अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आई तो देन दिस कैन बी डिसाइडेड कि कौन सा स्पेशलाइज्ड विंग जो है इज मोर सुटेबल टू टेक अप दैट इन्वेस्टिगेशन, एंड दैट विंग और दैट स्पेशलाइज्ड विंग कैन देन बी अलॉटेड टू प्रोसीड, then be allowed to proceed ahead with that case, and the rest can simply hold back. राइट तो क्या होगा, डुप्लिसिटी नहीं होगी, सिर्फ एक ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसमें डील करेगी, बाकी लोग जो है अपना टाइम उसमें बर्बाद नहीं करेंगे. राइट, दैट इज कंसर्निंग द डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स. फिर द नेक्स्ट थिंग विच हैज बीन रिकमेंडेड इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कंसर्निंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और इन द एंटायर फोर्सेज. तो इसके रिगार्डिंग सीजीआई ने कहा कि देखो बहुत एक जरूरत है आज की डेट में दैट वी गो फॉर जेंडर पैरिटी. ठीक है, दैट इज यू नीड टू एस्टैब्लिश मोर एंड मोर जेंडर पैरिटी विद इन द फोर्सेस. There are certain offenses where you need to have women officers who can play better role than their male counterparts, and that is where the gender parity or the increased representation of women comes into picture. Right? See, the point is that if you are not having sufficient number of female members as a part of your police forces, as a part of your investigative agencies, then what happens is, जिसके बारे में सीजीआई ने बात करी कि the women in the country, the female members in our society, in our houses, they are deterred in reporting certain offenses due to lack of such representation. देखो कई बार ऐसा होता है कि सिंपल सी बात है, एक महिला जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है to file her report or to discuss that case with a female police officer, right? But because of lack of representation of female members in the forces, in the investigating agencies, these women, they are deterred from reporting certain offenses, right? So what we require is that their presence in the policing system will further encourage hesitant victims to approach the criminal justice system and report crimes. ठीक है, so that will also ensure that there is gender justice or gender injustice is at least not done. ठीक है, right? Sir, is this also the case for lower conviction rates? Yes, certainly Vikramaditya, this is also the case, one of the reasons for lower conviction rates. देखो जो विक्रम बात कह रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर इनपुट, बड़ी सही बात कही है इन्होंने कहा कि क्या सर इसकी वजह से लोअर कन्विक्शंस भी होती हैं? एब्सोल्युटली. अगर आपका केस जो है उसमें एविडेंस डाइल्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्वड इनटू दैट, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स हैपनिंग, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग्स हैपनिंग, दैट ऑल्सो लीड्स टू लोअर कन्विक्शंस. देखो वही बात तो सीजीआई ने बोली कि भाई जो इनोसेंट है, जो मासूम है, उसको तो आपने भेज दिया जेल के पीछे, और जो एक्चुअल में गिल्टी था उसको आपने रिलीज कर दिया. राइट, सो दोनों चीजें हो रही हैं, एक हो रहा है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और दूसरा साथ साथ हो रहा है लोअर कन्विक्शन रेट्स ऑल्सो. कि पहली बात तो जो कन्विक्शन हो रही है मोरलेस दैट इज हैपनिंग इनकरेक्टली, जिसकी होनी चाहिए थी कन्विक्शन वो तो बाहर चला गया, और जिसकी नहीं होनी चाहिए थी, जो इनोसेंट था, उसको आपने कन्विक्ट कर दिया. पॉइंट नंबर 1. Point number 2, that is the conviction rate itself is low, and we all know that the judiciary, the CJI himself has in the past referred to lower conviction rates in the justice delivery system of this country, right? So I believe that is clear to you, Vikram. चलिए ठीक है. So I believe we have come to an end of today's session, and I'm pretty sure that I was able to deliver on all the three topics, and I was able to make you guys understand in simple plain terms the relevance of these topics, right? So that is all from my side. This is Piyush signing off. Thank you so much. Tomorrow it will be Anurag sir, he'll come with the Indian economy current affairs tomorrow, again the same time 2:30. जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हर दिन हम अलग अलग फैकल्टीज अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में आके डील करते हैं in the weekly current affairs, right? So tomorrow Tuesday it is Anurag sir. Catch you there live on YouTube at 2:30. Until then, stay safe, study well, and I'll meet you in the next week. Thank you so much. Bye bye and Jai Hind.